Hello everyone, this is Madha Thawar. Welcome back to our course that is Data Science with Python. So this is our seventh video. We have completed topics before this, six topic before this, that is basics and preparation models, evaluation, etc. In this video, we'll learn about neural networks. Okay, so here we are. Neural networks. So what is neural networks? Neural networks represent an attempt at a very basic level to imitate the type of non-linear learnings that occurs in the networks of neurons found in nature, such as the human brain. The main benefit of neural network is that they are quite robust for noisy, complicated, or non-linear data due to the non-linear nature of the activation function. So न्यूरल नेटवर्क क्या होता है? एक बेसिक नॉन लीनियर लर्निंग होती है जो कि इंस्पायर्ड है ह्यूमन बॉडी से, जहाँ पर नर्वस सिस्टम होता है, उसके अंदर न्यूरॉन्स पाए जाते हैं जो कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कनेक्ट करती हैं बॉडी के सेल्स को और पार्ट्स को। इसका न्यूरल नेटवर्क का एक बेसिक फंक्शन होता है कि वो रोबस्ट होता है नॉइसी कॉम्प्लिकेटेड मीन्स और नॉन लीनियर डाटा के लिए, और ज़्यादा एक्टिवेटेड फंक्शंस में इसको हम यूज़ कर पाते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट टॉपिक इस आज की हमारे लेक्चर का आता है कि डेमोन्स्ट्रेट एप्लीकेशंस ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स यूजिंग पाइथन। सो here is an example of building and applying a simple neural network for classification using Python and CARES, a high-level API for TensorFlow. We'll work with the Irish dataset, a popular dataset for multi-class classification task. This example covers data preparation, model building, training, and evaluation. Okay, the first work that we'll do in that algorithm is we'll import some libraries for our functions or user build functions. Okay, that is examples sequence from TensorFlow, Keras models, dense from TensorFlow, and load iris from sklearn dataset, and many more, accuracy score from sklearn. Then we'll load our data in data variable from load iris. Then we'll create our target and data variables that holds target value in data set. Then we'll prepare that categorical data. We'll decode that. Then we'll split training and testing data for x and y variables, having test size 0.3, that is 30%. Then we'll scale the data for x test and x train both. As we go further, we'll dense, that means इनपुट विल टेक इनपुट लेंगे हम सम यूज़र से, देन हम उसको कंपाइल करेंगे और टेस्ट करने के लिए हम उस मॉडल को हम फिट करके देखेंगे किसी भी उसमें फिट करेंगे मॉडल को, जिसमें हम आर्ग्यूमेंट्स पास कर देंगे एक्स ट्रेन, वाई ट्रेन, टिपोज, बैच साइज, वैलिडेशन स्प्लिट एक्सेट्रा। देन हम उस मॉडल को इवेल्युएट करेंगे और प्रिडिक्ट करेंगे कुछ आर्ग्यूमेंट्स को। आर्ग्यूमेंट को प्रिडिक्ट करने के बाद एज यूजुअल हम फिर एक्यूरेसी का फाइंड करेंगे। एक्यूरेसी फाइंड करने के लिए हम एक्यूरेसी स्कोर का यूज़ करेंगे, एंड देन हमारी एक्यूरेसी हमारे साथ हो हमारे पास होगी। So this is all about this video. Well, we'll meet in the next part of our series, Data Science in Python. Thank you so much for watching this video. Thank you so much for watching this video once again.